Okay. Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Stuti Speaks. And I'm super happy today because the guest I have today, yesterday only won the India's first voice of anchor tag. And I think we collaborated before and then later got to know about the results. So this is the most happiest moment of mine because I'm the first one collaborating after she got the title. So today I have Taz with me. She's pronounced as Talia Khan, and I am having her on my show is like real pleasure. So thank you so much. How I met her is again the same story. How I met other podcasters. So जैसे मैं उन लोगों से मिली, that's the same way I met her. So I put a story and I asked her that whether she would want to collaborate with me, and I was happy that she said yes. And now I'm like more happier. She got the such a reputed award from Voice of Anchor, and I. तो यू वोंट बिलीव टायर्स के जिससे भी मैंने बात करी है एवरीबडी वाज गागा अबाउट यू वॉइस ऑफ एंकर में मतलब मैंने आई थिंक 4-5 लोगों के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुकी है वन इज तुषार सेकंड इज अनुदीप थर्ड वाज अनुराग टुडे एंड तो फोर्थ आर यू मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने आपकी तारीफ नहीं करी है तो आई एम लाइक मतलब बहुत ज्यादा इलेटेड फील हो रहा है मुझे आपसे बात करते हुए सो आई हैंड इट ओवर टू यू एंड थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो एंड यू कैन टेल अ बिट अबाउट योरसेल्फ और हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर यू या So, first of all, thank you so much, Stuti, for having me on your show. And I'm so very honored that you invited me. And I'm so honored to hear all of these compliments from everyone. I mean, I really feel so happy. And I would like to say one thing that today only I was shooting a video to thank everyone who actually messaged me. Congratulations after Voice of Anchor. But I have said one thing in that video which I'm sharing here is that I know that I have won a title, but more than that, I think I have won a amazing community. Like I have such a beautiful community to look back to lean on, and I think that is something which is going to stay with me forever and ever. I think that is like such an amazing treasure for me. So मेरे लिए किसी भी price के ऊपर है. Honestly, that is so priceless for me, and I'm so very happy for that. And like I feel that I've got an extended family now, so I'm so happy about it. um Thank you. Yeah, that's like सुन के भी I'm feeling like very nice. Yeah, it's very good to get a community of people who understand you, right? And who know what you are doing and how like कितने passionate हो आप वो करने के लिए. yeah, so my journey actually is a little long, so but I'll try to complete it very fast. Like I started podcasting in 2012, and at that time I did not even myself know that this is called podcasting. And it was like I always wanted to be on the other side of the mic, and I had no one from the media industry in my whole family. Everyone is either into government job, like that too into teaching and all, and nobody has any interest or passion in any of the creative fields. I think I was the only one who had such a kind of interest, and bachpan se I always wanted to be on the other side of the mic. At the same time, I had a lot of interest in computer science, so I chose that. And I remember that I used to think that after my graduation I'll definitely go for an internship in my radio thing. And I did give a lot of audition. I cracked a lot of audition. And you know what, like मैं ना कभी भी I'm never interested in politics and all. But college में जब election हुए तो उसमें I specifically stood for the elections of cultural secretary. And the reason was कि if I become cultural secretary, there I have to conduct events and I have to get media sponsorships. And in media sponsorship I definitely have to get radio sponsorship. So at least I'll be a little step closer towards radio. And just for that, I stood for the college elections. And at that time मतलब metro वगैरह ऐसा कुछ था नहीं. I did not even have my own vehicle. I used to travel in buses and all from one end to the city to the other. And सुबह से लेके शाम तक I used to stand in every college fest जहाँ पे भी कोई आरजे हंट चल रहा है, जहाँ पे भी कोई रेडियो पार्टनर है. एंड क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया, इट वाज लाइक अ हाईलाइट ऑफ द इवेंट. तो ऐसा कभी भी नहीं बताते थे कि
that today the RJ hunt is going to happen or representative from radio will come. So just so that I don't miss, I used to go every day. अगर 7 दिन का फेस्ट है, सातों के सातों दिन मैं जाऊंगी, चाहे सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़े, so that I get an opportunity to Wow. meet someone from radio. And that is how I cracked few auditions and all. लेकिन फिर like things did not favor because my father expired, and उसके बाद ऐसा हो गया था कि I had to get somehow campus placements and all. And मैंने अपना मन बना लिया था कि ठीक है, मतलब I always wanted to be on the other side of radio, and that is like my first love. But सबकी लाइफ में first love तो नहीं मिलता, तो ठीक है, मतलब fine. And then I got campus placed. I came into the IT industry, and in IT industry, there is nothing like 9 to 5. It's like 9 to 9, 9 to 10, 9 to 12. Like उसमें कोई time limitation नहीं है. And I started with my internship, and in that internship, I was not being paid. It was like 6 months के बाद they will start giving me some stipend and all. So उस टाइम पे I thought that I always wanted to be, on the other side of radio, and that thought never stopped me. तो मैंने सोचा कि what should I do? So for that I thought कि क्योंकि मैंने काफ़ी सारे शोज़ सुने थे साउंड क्लाउड पे, तो मेरे मन में था कि ये सब ना इंटरनेशनल आरजेज़ होंगे एंड उनके शोज़ होंगे, तो भाड़ में गए सारे रेडियो चैनल्स, मैं अपना खुद का शो बनाती हूँ। एंड मेरे पास ना कुछ माइक कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं ना बस टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर में आई यूज्ड टू पुट एन ऑडियो कैसेट एंड उसको रिकॉर्ड करके आई यूज्ड टू सेव सम मनी, जो भी पॉकेट मनी मेरी होती थी कि मतलब ठीक है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा पैदल चल लेती हूँ, बाहर का कम खा लेती हूँ, एंड आई यूज्ड टू सेव अ लॉट ऑफ पॉकेट मनी। एंड फिर मैं काफ़ी सारे ट्रैक्स रिकॉर्ड करके आई यूज्ड टू गो टू अ शॉप एंड वो बार्गेन करती थी। दैट पर्सन यूज्ड टू कन्वर्ट ऑडियो कैसेट टू डीवीडी, टू सीडी, टू एमपी3, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। आई यूज्ड टू गो देयर एंड बार्गेन कि भैया मतलब मेरे पास ना 10 ट्रैक्स है और और मुझे ना कन्वर्ट कराना है, आप ना मुझे 7 के प्राइस पे दे दो या 8 के प्राइस पे दे दो, प्लीज़, प्लीज़ भैया दे दो। एंड वो कन्वर्ट करवा के आई यूज्ड टू टेक दैट टू अ साइबर कैफ़े, एंड साइबर कैफ़े में जाके आई यूज्ड टू अ, जस्ट ट्राई टू, क्योंकि वहाँ ऑडासिटी भी नहीं होता था, आई यूज्ड टू एडिट इट ऑन विंडोज़ मूवी मेकर, वही एक मिलता था। एंड उसके बाद फ्रॉम विंडोज़ मूवी मेकर यूज्ड टू अगेन कन्वर्ट इट। तो इतने सारे कन्वर्जन्स, कंप्रेशन के बाद ऑब्वियसली ऑडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, और उसमें आप क्यू भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो बड़ी मुश्किल से मैं करके आई यूज्ड टू पुट आउट द शोज़ एवरी वीक। एंड Wow. एंड That is inspiring. Yeah, it's like already 10 years, 2012 since 2022, and that's the kind of passion I think. I mean, I'm like stunned to hear that. People told me, I mean, nobody told me your story, but hearing it's like I'm already having so much goosebumps. Yeah, continue. Yeah. so from there, then I started getting salary. तो from my first salary I could afford Nokia 1100, जो कोई बहुत खास अच्छा फोन नहीं था, बट फिर मैंने उसमें अगेन स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू गो टू साइबर कैफे एंड अपलोड एवरीथिंग। तो ऐसा काफी सारे साल रहा until we got good Wi-Fi and 4G and all of these connections. तो उसके बाद तो of course I've been doing it from my mobile phone only. It's only like in the last 2 years I got a mic for myself and a good laptop. Otherwise, उससे पहले because of so many responsibilities and all, I was just doing it through my mobile. काफी जुगाड़ करके कि like मोबाइल को सॉक पहना दिया, या फिर अपना I put my head inside a drawer, or I put myself inside a Godrej or Almirah, or I put some chaddar or kambal on me so that sound वो ना आए, क्योंकि आई लिव एट अ प्लेस जहाँ पे हर वक्त देर इज अ लॉट ऑफ रौनक, तो यहाँ पे साउंड लेस टाइम होना रेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो these Hmm. all tricks help me, and then I learned a lot of editing, how I can bring out the best from the existing audio, और कोई sound अगर आ भी जाता था, तो I used to try to incorporate that sound in whatever I'm speaking, ताकि वो कोई extra sound ना लगे। So all of these trial and error से I started podcasting all of these years. So that has Hmm. been my journey of podcasting.
I mean, ये सुन के I lately heard your one show which is SDLC से शादी. I mean, that was something like that. And I'm also from IT industry. I'm a project manager in Wipro. So मेरे को I can relate to how SDLC works, how things work basically, production and all that. तो मैं बहुत हद तक relate कर पा रही थी. But the way you incorporated people's and drama and Tishar's Anudeep's voice and the music and everything, I mean, I was like, this is masterpiece. मतलब मेरे को सुन के ही उसे ऐसा लग रहा था कि कितना मेहनत गया. एंड नाउ यू आर सेइंग कि नोकिया 1100, मुझे मुझे वो सुन के कभी आई कैन नेवर इमेजिन कि वो जर्नी भी रही होगी. आई मीन इट्स लाइक मैं सोच भी नहीं. आई थिंक मैंने वो कल परसों ही सुना एंड आई वाज लाइक स्टन्ड के दिस इज लाइक रियली बहुत ही मेहनत का नतीजा है ये. एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग. एंड ऑब्वियसली आई कैन रिलेट बिकॉज मैं फील की हूँ तो और ज्यादा. बिकॉज अगर कोई आईटी से ना हो तो फिर उसे इतना समझ थोड़ा कंपैरेटिवली कम आएगा. बट जब तुम यू आर इनटू इट तो बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो. बट यार बहुत ही अमेजिंग. So how things like बीच में कैसा रहा? Obviously, this is like now a very good phase. Initially, it was tough. Initially, बहुत tough और struggle था. तो बीच का like how about like 2016 से 2019 तक और before COVID उस time क्या क्या चल रहा था? So, because of podcasting, I got my first TED talk, and then after that, I got an opportunity to work with online radio channel, and then with All India Radio. तो मेरा ऐसा शेड्यूल हो गया था कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस एंड सैटरडे संडे आई यूज्ड टू गो टू ऑल इंडिया रेडियो. एंड ऑल इंडिया रेडियो के बाद आई हैड सम और द अदर इवेंट टू अटेंड और गो. कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता था. तो आई रिमेम्बर फॉर like between 2016 till 2020, मतलब the pre-COVID era, these 4 years, I had very less time for myself. And जो भी time मिलता था उसमें भी I used to travel for vacation and all. So it was very less time for myself. So in that time, my podcasting had come down because I had a lot of commitments already with me. So what happened was that in 2020, when the world stopped, so did All India Radio, and only the news services division was active at that time. No live show was going, but all of my listeners, they started messaging me on Facebook and saying that why are you not coming on air? We really want to hear you, and why are recorded shows coming and all. And Jesse, it's so tough to get followers on Instagram, on social media. It's very, very tough to get your listeners on radio as well. And I did True. not want to break that bond. So for that, I started a new podcast, which was Tales by RJ Tales in the March of 2020. In which every day I used to do a show for 5-10 minutes, and I used to share my daily tips on like what problem I had, what challenge I faced, and how I'm unlocking the lockdown. And I used to bring guests also, जो मतलब I never try to bring फैंसी गेस्ट ऑन माई शो जो बहुत फेमस है. मुझे लगता है उन सबको एयर टाइम मिलता है, बट Hmm. आई ऑलवेज वांट टू ब्रिंग गेस्ट जिनको सच में एयर टाइम दे डिजर्व. एंड मे बी माई पॉडकास्ट कैन बी अ वे थ्रू विच पीपल कैन नो देम मोर. एंड सो दे केम एंड दे यूज टू शेयर देयर जर्नी कि हमने ऐसे किया, हमने वो किया. एंड that time a lot of people started messaging me after fourth or fifth episode that we really like your podcast, and after listening to your podcast we have also started our podcast. And Wow. मेरा पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता था सबके ना क्वेश्चंस आंसर करने में डीएम में कि अच्छा एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंट्रो कैसे बनाना है, एप्पल पॉडकास्ट पे कैसे डालूं, अच्छा चार्ट्स पे कैसा आएगा. तो ऑल ऑफ दीज क्वेरीज आई यूज टू रिजॉल्व. पूरा पूरा दिन मेरा इसमें चला जाता था. And I had such an amazing bond with my listeners. And then when we, because I was doing it all every day, so जब मेरा first month complete हुआ podcast का, it was the 31st episode. जब me and 15 other podcasters came on my show who had heard my podcast and they got motivated to start podcasting after listening to my podcast, and we all did a show together. And that had Wow. the most sweetest and loveliest memory of all in my podcasting career so far. So Wow. then I remember that podcast, everything was going on well. I started my podcast coaching because everyone was really insisting that please start podcast coaching, we want to know this, we want to know that. So I started a lot of free session. I think I did about more than 100 sessions for free. I because I'm Wow.
passionate. I was like, I don't want to earn anything from it. But then slowly, people only started telling me that, you should not do it for free, at least charge something and all. Because that thing ke, jab I see someone doing a podcast and they tell me that they started it because of me, that kind of happiness can never come down with money. Replace. तो Hmm. वो चीज की खुशी Hmm. मैं अपने से छीनना नहीं चाहती थी. That's why I did that. So I think in 2020 I coached more than 200 people, but I could not do it regularly because in the lockdown tremendous amount of work increase at office. So True. कोई कोई बाउंडेशन ही नहीं रह गया, कोई मतलब डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ. एंड यू कांट इवन से कि मुझे बाहर जाना है, मेरी तबीयत खराब है, बिकॉज पीपल कैन थिंक कि अरे कोविड तो नहीं हो गया एंड बाहर आप जा नहीं सकते, तो करना क्या है, ऑफिस का काम करना है. तो वो वाला फेज था. But then slowly I started taking out more time for all of these things. But 2021 May, when the second wave came, that was a time where I felt the most demotivated one. And I felt that I should not create any kind of content, and only I was there on social media, so that if anyone reaches out for any kind of help, I can at least help them for any kind of thing they want. It could be food, it could be oxygen, whatever. So I think that really affected me a lot. And for 6 months, I did not do any episode on my podcast because I was very sad, by losing people in my family and by losing, friends also. And I did not feel like, creating content. And then dheere karke again I started, getting back into pace, and again, Hmm. becoming more regular. And then, Hmm. of course, Voice of Anchor started, and Hmm. we all created a new show. I started Yes. with IT Se Life Hmm. Tech podcast, and IT, then, and I want to talk about ITC Life Tech, but before that, I want to say something. Can I say something? So basically, I'm a spiritual healer as well. So in healing or in life as such, we say कि आप जितनी energy देते हो, it comes back to you in some or other form. So Mhm. whatever energy you gave back at that time, I think that came back in form of so much love again back to you and winning this awards, and then so much of appreciation now coming in because कहीं ना कहीं you have put that energy back into universe, आपने वो करी है. So now it will like come back to you and keep coming back to you in abundance. So I'm very sure कि ये आती ही रहेगी अब, because that I've seen myself for you as well. So I feel कि जितना भी, anyways, you are still putting that energy, but it generally comes back like into 10x form, and I think it's already coming back to you. जितने भी लोगों को you coach, जितने भी लोगों को you help. So before we talk about ITC Life Tech, and I would recommend audience who is listening this, if you are especially from IT, you need to listen that podcast for sure. It's on Spotify and I think other platforms as well. I'm not sure because after winning the title, she could be Spotify exclusive as well. So Oh, yeah, sorry, you not really should. not like quoting unquoting, but yeah, that should be like censored. But anyways, so saying that, how did TEDx happen? And obviously, there were many. I have talked to 2, 3 people in my podcast who have been TEDx speaker. So I especially asked about like TEDx के बाद चीजें कैसी हो रही है, because I feel being a TEDx speaker change your personality somehow. So you want to tell something about that? So I got the TEDx opportunity in 2015, and I did not even know that TEDx is so huge. Like these days, I see people, they are so much crazy कि यार मुझे एक TED talk मिल जाए. But उस time Hmm. पे I did not even know कि it's such a huge thing. So some person from the college committee who was organizing the TED talk, they had called me up and they said that on this and this date we'll be having an event, and can you deliver a talk which is around dreams. सो आई सेड या डेफिनेटली. एंड मैंने उसको ऐसे ही समझा कि मतलब वो एक नॉर्मल कॉलेज इवेंट ही होगा. देन धीरे धीरे करके जब मैंने गूगल किया and जब मैंने जाना, सो आई स्टार्टेड गेटिंग गूज बम्स की ओ माई गॉड, लाइक इज दिस रियली हैपनिंग फॉर श्योर. बट आई एम सच अ पर्सन सुती, आई डोंट लाइक टू just because of social media आपको ये सब लिखना पड़ता है कि I've done this and that. But for at least 2 3 years I never put it out anywhere that I am a TEDx speaker, because I
आई डोंट नो, आई डोंट लाइक टू फ्लॉन्ट एनीथिंग आई डू। आई फील कि यार ठीक है, मतलब अपने लिए किया है, मैं उसमें क्या ही सबको बताऊं, मतलब आई डोंट लाइक टू डू इट एट ऑल। सो but all of my friends, they said that, you know, how will anyone, and even the brands and anyone who reached out to me, they said that, you know, you should put everything out on your profile, it's really important. So I remember when I was practicing for TED, like practicing in the sense you have to send them a draft and all, and they ask you to shoot videos. There's a lot of behind the scenes which happens, and that was happening. I was not even told who would be my co-speakers and all. I got to know them a day before only, 2 3 days before, and I was so shocked because उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आम इंसान हो. Everyone was a celebrity. Like if you know Saloni Gaur, who is a famous comedian and social media creator, Yeah. her brother Shubham Gaur, he was there in the same TED talk. We share the stage. So when I looked to everyone, I was like, यार मतलब कोई जर्नलिस्ट है, कोई कुछ है, मतलब मैं तो एक नॉर्मल आईटी एम्प्लॉई हूँ यार. So I was even getting more and more nervous. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कुछ करूँ और उस चीज में टेक्निकल ग्लिच ना आए. सो आई वाज द फर्स्ट स्पीकर, एंड जैसे आई वेंट ऑन स्टेज, इमेजिन आई वाज सो नर्वस, और फिर लाइट चली गई, थिंग्स स्टॉप वर्किंग, और उसको फिर रिवैम्प करने में इतना टाइम लगा, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन स्टेज एंड आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक ओ गॉड, व्हाई डिड दिस हैपन. बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने आप को पंप किया था स्टेज पे आने के लिए. एंड मतलब all of that, then I just started with all of my insecurities and just telling that what I'm feeling, etc., and I started my speech. And after the, I was just so much into it that I did not, you know, think कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा. I was just into the moment. And when I ended it, everybody stood, people had tears in eyes, they applauded. I came down the stage and people were like कि मैम आपको autograph मिल सकता है. And I was like, प्लीज कोई ऑटोग्राफ वगैरह वाली बात ही नहीं. आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, सीरियसली. आई एम जस्ट लाइक दैट पर्सन यू विल बिकम आफ्टर कैंपस प्लेसमेंट, जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एंड नथिंग एल्स. सो I I was so overwhelmed, and like I got so much appreciation from everyone. And from there I started getting more and more events. Like I represented India at WordPress, in WordPress conferences at Malaysia. I also Wow. spoken at a lot of WordPress conferences in India also. I did my executive masters from IIT Delhi, and then I also published a research paper which I again represented India at the Academy of Global Business Advancements at Thailand, and that research paper was published in McGraw International, and Wow. so I authored that also. I also co-authored another book. Then I had a lot of, you know, interviews, of course, on different podcasts as well, but also into newspapers. So, like, that is how the journey has been. But वाओ! यार ये सब तो मुझे भी नहीं पता था दैट आई एम टॉकिंग टू सच सच हॉट शॉट मतलब मुझे आई जनरली इतना नहीं पता था आई डिडंट न्यू सो आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड नोइंग ऑल दिस बहुत ज़्यादा मुझे ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है. So thank you so much for saying yes to me and talking. It's like super motivational. Yeah, and then further, yeah, you were saying something. so then I started getting more and more opportunities, like from from WordPress. From I also got this great opportunity from WordPress London just before COVID happened. So all these opportunities definitely came because I took the first step to probably put out my thoughts across into the space via podcasting. So when people say ना कि podcasting से कुछ नहीं होने वाला आज की डेट में, I feel कि मतलब I started podcasting when, you know, it was not even something, you know, in India, right? I think there were very few Indian podcasters at that time. And today there are so many creators. There's no chance that if you don't start today and you're consistent and great in that, you cannot achieve. So that Hmm. is for sure. Hmm. You have motivated me to stick on my routine and be consistent. Thank you. So अब बात करते हैं थोड़ा सा आईटी से लाइफ तक के बारे में because that's the winning podcast and that's the voice of anchor now as well. So how did that started? Like उसका concept कैसे आया और वो भी इतना I mean to point like बहुत relatable है. Maybe because you are relating to that yourself so it's coming out that way. But वो कैसे idea कैसे आया वो?
So I had this idea, matlab, all these years while I was working in IT, I always now have this thing to connect something. So because the whole day you're in office, you're just working, तो ऐसा हो जाता है कि कोई गाना चल रहा है तो उस गाने के लिरिक्स मेरे मन में ना आईटी से रिलेटेड हो जाते थे। और कोई सिचुएशन होती थी तो कोई मूवी देख रहे हैं तो उसकी सिचुएशन मैं मैप कर लिया करती थी कि यार ऐसे तो हमारे साथ भी ऑफिस में होता है। तो मतलब दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट आई ऑलवेज हैड इन माइंड, बट आई वाज सो स्केप्टिकल टू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड, थिंकिंग कि कोई पागल ही समझेगा, कौन ही सुनेगा यार। तो but when this voice of anchor happened, so I thought that it's like a way to explore your creativity. Why not make use of this opportunity? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, but at least I want to do it. At least अच्छा feedback मिलेगा, लोग बताएंगे कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, which I can not get otherwise. So it's because of that I started IT से life तक, and I started to put out I have like a huge list of episodes, so I'll be putting it out with time. And I try to always map the concepts of IT with something relatable to life, ताकि जो भी सुने उनको ये ना लगे कि यार it's just another technology show. And अगर वो आईटी से नहीं है तो उनको भी इंटरेस्ट आए सुनने में कि अच्छा एसडीएलसी में ऐसा होता होगा, बिकॉज मैरिज इज समथिंग जो हर कोई जानता है, हर कोई फेस करता है। तो दैट इज हाउ आई रिलेटेड इट टू एसडीएलसी। तो Hmm. ऐसे ही देयर वाज एन एपिसोड अराउंड, आई wanted to talk about the side effects a metaverse can have. तो मेरे दिमाग में आया कि बिपाशा बसु को आई हैव सीन इन एवरी अवतार, लाइक आई हैव सीन बिपाशा बसु एज अ भूत इन अ कैमरा, I have seen Bipasha Basu as a booth in a picture, like 8 by 10 tasveer. Then I have seen Bipasha Basu booth on a tree, like in every avatar. So now the only thing which is left is metaverse. तो चलो इसके ऊपर एपिसोड बनाते हैं कि how metaverse can be harmful. तो I created a sort of episode जहाँ पे बिपाशा बसु का भूत मेटावर्स में होता है, and it tries to uh, tries to extract information from you so that they can use it in a wrong way. So Hmm. and because it's such so experiential and you're totally into the metaverse, तो आप कहीं ना कहीं उससे drift away ना हो जाओ, and you just start thinking कि हाँ, somehow you start giving me information. So it was around that, so it was a very crazy episode. And मुझे ध्यान है जब मैं स्क्रिप्ट कर रही थी आई वॉज माई सेल्फ लाफिंग, एंड जिसको भी मैंने डायलॉग्स रिकॉर्ड करने को दिए थे तो उनको भी बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि उनको भी हंसना नहीं रुक रहा था। ये वाला मैंने नहीं देखा, ये वाला मैंने नहीं सुना है। आई विल बी इसके बाद ही पॉडकास्ट एंड होते ही आई विल बी गोइंग एंड लिसनिंग टू इट बिकॉज ये साउंड इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज यू वर द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम दैट टेप रिकॉर्डर जर्नी एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, लाइक you are from you started from that to this, like it's huge, it's like कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पे पहुंच गए to W3 metaverse and like multi obviously web 3 भी आने वाला है। So that's how the journey, इतना vast journey, only I mean I can understand that कहाँ से कहाँ तक की struggle challenges और चीजें देखी होंगी। So I can completely, इसके बाद ही I'm going to go and listen that. So we have talked like a lot, but towards like as we are reaching towards the end, एक दो तीन like 3 4 tips, और tips भी क्या बोलूंगी, like lesson you learned in your journey you want to give to people who are podcasting you or who want to create something, मतलब कुछ भी creative people are not कि किसी का podcasting भी passion है, किसी का कुछ भी हो सकता है, right? So you what you learn from following your passion, because what I'm seeing is like you are doing a, I mean, you're doing a regular job plus this side hustle plus everything, and you are doing it like I think doing it quite good and managing everything. So अगर किसी को भी listeners who are listening to us, किसी को भी लग रहा है कि हाँ obviously वो full time नहीं pursue कर सकते, so what you learned from like your journey that you want to tell? So, when I started, I did not have any resources. I started with a tape recorder, and I was not even conscious that what will people think that I'm doing it from a tape recorder, sound quality, kaise, etc. So I think if I would have just given it a thought, second thought, or I would not have been passionate about it, I would have not done. So like, you see so many motivational talks, मैं भी देखती हूँ सब लोग कहते हैं पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए।
but nobody tells what is the true definition of a passion. Hmm. So a lot of people ask me this question कि आप कैसे time manage करते हो with your regular work? How do you do all this? And I know this because I am very passionate about my passion. तो अगर मैं एक दिन भी उस पे काम नहीं करूंगी ना, चाहे मेरा Hmm. काम ऑफिस के काम के बाद ऐसी हालत हो कि यार बस अब मुझे बेड चाहिए and मुझे सोना है, मुझे खाना भी नहीं खाना, मैं शायद खाना स्किप कर दूंगी, बट इफ आई डोंट स्पेंड 30 minutes on doing some work of my podcast, I कैन नॉट स्लीप. इफ एट ऑल मैं Hmm. थक कर सो जाती हूँ ना, तो मुझे सपने डरावने सपने आते रहते हैं जिसमें आई गेट दी साउंड वेव्स कि तुमने आज काम नहीं किया, तुम नहीं हो पैशनेट, मत बताओ दुनिया को जाके कि तुम पैशनेट हो. तो आई स्टार्ट गेटिंग दैट, इमीडिएटली गेट अप कि नहीं नहीं, आई हैव टू डू इट. सो अगर Hmm. आपके मन में ना किसी भी चीज को लेके ऐसा पैशन है, दैट इज Hmm. एक्चुअली व्हाट इज पैशन. एंड Hmm. इफ यू हैव सच काइंड ऑफ पैशन ना, आप मतलब आप कैसे भी करके टाइम निकाल लोगे. और दूसरा थॉट मुझे आता है कि यार मतलब आई डोंट नो कल को क्या हो, लाइफ इज सो शॉर्ट. प्लस not only that, I don't know what will happen. Will I be, in such a state to do anything in life? तो मतलब बस ये जो पल है इसको जी भर के जी लो, इसमें सब कर लो. Wow. So that is Wow. what I always try to do. And because I don't want that when I die or when I'm old and I'm not able to do things, at least I can consume my own content and feel ke chalo, when I had time and energy, I followed my passion. मैंने अपनी जिंदगी जी और I don't have regrets from life. So दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको किसी भी चीज को करना है ना, तो आप उसको अपना प्यार बना लो. और जैसे प्यार Hmm. में इंसान ना अपनी लिमिट से ज्यादा करता है, जब आप Hmm. उसको अपना प्यार बना लोगे ना, तो आप लिमिट से ज्यादा करोगे. आप हमेशा उसके बारे में सोचोगे और एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि आप नहीं करोगे. दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट यू शुड डू, irrespective of whichever area you are. If it is Hmm. podcasting, make it your passion. If it is YouTube, travel, whatever, if you are Hmm. passionate about it now, you will definitely find a way to do it. And you will Hmm. never think कि यार कैमरा नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. In India, so I Hmm. think वी आर सो टैलेंटेड एट जुगाड़ कि हम कुछ ना कुछ वे निकाल ही कर ली. लेते हैं. फॉर Hmm. श्योर. तो मतलब if you are Indian and if you're listening to this and if you're passionate about this, I'm sure आपके पास ना कोई जुगाड़ है, आप डेफिनेटली करोगे. बस कुछ Hmm. मत सोचो, करना स्टार्ट कर दो और भाड़ में जाए दुनिया, जो सोचना है सोचने दो. आप एक बार शॉट दो प्लीज. हम्म. यार बहुत हार्ट वार्मिंग हो गया मेरे लिए द वे यू सेड के प्यार बना लो. आई कैन कम्प्लीटली रिलेट. और जब सही में जब कोई चीज तुम्हारा प्यार बन जाती है, व्हेन यू डू थिंग्स डिफरेंटली, यू डू अपना पुश करके भी, एंड यू डू जैसे यू आर सेइंग कि ठीक है 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम यू फील, क्योंकि नींद नहीं आएगी आपको, यू जेन्युइनली फील कि मैं सो जाऊं, बिकॉज तुमने अपना वहां पे नहीं दिया जो तुम देना चाहते हो. एंड इवन वर्किंग टूवर्ड्स लाइक छोटे छोटे स्टेप्स, तो भी दैट वुड वर्क. बट यार बहुत हार्ड वर्क. The why I started season 2 was I wanted to learn from people. मैं शायद मल्टीपल पॉडकास्ट में ये बोल चुकी हूँ. द टाइम आई टॉक टू पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपसे बात करके 30-40 मिनट्स में आई कैन लर्न कि मेरे को शायद एक बुक पढ़ के जितनी लर्निंग हो रही है ना, उतनी मुझे आपसे 30 या 40 मिनट्स में बात करके हो गई. एंड दिस वॉज द बिगेस्ट टेक अवे. आई मीन मोरलेस मुझे नहीं पता कितने लिसनर्स अभी सुन रहे हैं और कितने अभी एक्टिव है मेरी पॉडकास्ट पे, बट फॉर मी it's a huge learning, especially talking to people like you. मेरा मतलब मेरे लिए high vibrational talk होगी, मुझे तो motivation मिल ही गया. So I think really very 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 thankful to you for joining in my show. I mean I think this is the one of the best one till now. I'm like very बहुत ज्यादा सही में overwhelming हो रहा है. So thank you so much, Tal, for coming in, and I am like again congratulating you for being the India's first voice of anchor. I'm sure मैं आने वाले time में I'm seeing your huge success growth in every area. So thank you so very much, and I hope my listeners are equally thankful to hear you today. So thank you. थैंक्स अ लॉट स्तुति फॉर हैविंग मी. एंड ऑनेस्टली इट्स सच एन ऑनर कि आपने मुझे बुला रहा, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको आगे कुछ You सिखा are. सकूं. नहीं, मैंने मैंने आई यू वोंट बिलीव, मेरे को जितना जितना 20-25 लास्ट 25 में मुझे जितना मोटिवेशन मिल गया ना, मुझे नहीं पता. आई कैन आई मीन ऑब्वियसली आई थिंक पीपल कैन गेट इक्वल अमाउंट, बट मेरे लिए तो इट्स लाइक इट केम एज इन रियल बून.
So thank you, and you really deserve this. Like इससे भी ज़्यादा, and like it's my honor, not yours. So thank you so very much. And for the listeners who are listening us, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. And I'll be putting all the details about Tals in my Instagram, so that in case you want to reach out to her, feel free to do that. And Tals, in case you are doing any more workshop, and obviously, I would want to that would do with energy exchange. So whatever you are charging, I would love to join that as my like मेरे को खुद से भी join करना है. So thank you for that in advance. Keep me posted about that. So on that note, I'm ending this podcast for today. I will see you all in my next one. Bye. Take care.